to English. The class, ethics and values. We are at the verge of the end. शेष पर्यायर आम पहुँची जाचे आज हूँ शेष क्लास एथिक्स एंड वैल्यूज बुक्स आज सर पिले या पर देखा आउ नेक्स्ट कौन पढ़ा इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम एंड सिचुएशन। तो शेष क्लास रे अच्छी वुमेन एंड प्रॉपर्टी राइट्स स्त्री एवं संपत्तिगत अधिकार जो रहा। तो आम समाज रे महिला माननकु जो वैल्यू दिया जाए आउ प्रॉपर्टी संपत्तिगत अधिकार महिला मानकु किभଳି मिले कौन अच्छी तार स्थिति से विषय संपूर्ण भाव ये क्लास रे। तो शेष कालांश निश्चित भाव शेष पर्यटन देखा पिले। तो प्रॉपर्टी सिंपली मीन्स व्हाट ए पर्सन ओन्स। प्रॉपर्टी स्टैंड पर व्हाट ए पर्सन ओन्स मनीष जहाँ निजर अधिकार रे थाए जहाँ तार सेटा होची प्रॉपर्टी बा संपत्ति आम जहाँ कहे। ओनरशिप ऑफ एसेट्स allows people to lead an economically secure life and ownership of assets कौन सी एक जिनसर अधिकार जिते बड़े जड़े लोक को मिलता है it allows people to lead an economically secure life आर्थिक भाव स्वच्छल हाँपाई आम पाखे किसी assets रहा दरकार। Article 17 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 13 to 16 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women states that both men and women have the rights to own property। दुईटा क्लॉज मन रखा पिले। प्रथम जिनस हूँ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जोटा तार आर्टिकल 17 तापरे 13 and 16 आर्टिकल 13 and 16 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women ये दुईटा आर्टिकल स्टेट करुची कौन स्टेट करुची जे दैट बोथ मेन एंड वुमेन स्त्री एवं पुरुष मैन एंड वुमेन हैव द राइट टू ओन प्रॉपर्टी निजर संपत्ति सेमानंक पाखरे रहिबाटा सेमानंकर अधिकार। मैन एंड वुमेन नॉट ओनली मैन केवल पुरुष जे संपत्तिर अधिकार रहिबो से पुरुष बोली कि से ही सब संपत्तिर मालिक ये जो ट्रेंडटा अछि दैट मस्ट बी चेंज्ड ए जिंस चेंज होबा दरकार। Women's property rights are also implicit in the Millennium Development Goals, specifically Goal 1 and Goal 3. जो हमारा Millennium Development Goal जो strategy अच्छी, according to that, it implicit in the Millennium Development Goals, especially Goal 1 and Goal 3. Property rights actually human rights. So what is property right? Property right is nothing but it is human rights, मनुष्यर अधिकार। संपत्तिर अधिकार होची मनुष्यर अधिकार। बट इन मैनी कंट्रीज वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स आर रेस्ट्रिक्टेड बाय नॉर्म्स। स्त्री मानंकर संपत्तिगत अधिकार को रूल एंड रेगुलेशन भितरे आबद्ध करिकी रखी दिया जाता है। इट इज कंट्रोल बाय नॉर्म्स। कंट्रोल बाय नॉर्म्स। रिलीजियस ट्रेडिशंस धार्मिक प्रथा रिलीजियस ट्रेडिशन सोशल कस्टम सामाजिक विधि व्यवस्था एंड लेजिस्लेशन नीति नियम फॉर ए लॉन्ग टाइम बहुत दीर्घ समय धरी इंडिया वाज वन एमंग देम एंड इंडिया वाज वन एमंग देम। भारत रे भी यही व्यवस्था प्रचलित थिला जे पुरुषर संपत्ति एकचाटिया अधिकार यही व्यवस्थाटा भारत रे भी प्रचलित थिला। According to UN Habitat, United Nations Organization of Habitat, 1 in 4 developing countries has laws that prevent women from owning property. चारिटा देश भितरु गोटिए देश रे 1 in 4 developing countries has laws that prevent women from owning property. Getting me? In India, भारत रे कौन हुए प्रॉपर्टी इज ट्रीटेड एज द मोनोपोली ऑफ द मैन। प्रॉपर्टी इज ट्रीटेड एज द मोनोपोली ऑफ मैन। पुरुषर एकचाटिया अधिकार संपत्ति बोली कि भारत रे कहा जाए बिले नहीं। एंड वुमेन वेर डेप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। वुमेन आर डेप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स से माननकु वंचित डेप्राइव्ड कहले कोना वंचित से माने संपत्तिगत अधिकार रु वंचित होइकी अछंती कोठी भारत रे। इवेन टुडे आजिर कथा भी जदि आलोचना करा जाए
property is always in the names of their father or in the names of their husband. आमे घरे भी देखिथिबा property is always in the name of their father or in the name of their husband. तांको स्त्री माने स्वामी मानक नारे थिबो प्रॉपर्टी नतुबा बापांको नारे थिबो प्रॉपर्टी केबे मांको नारे प्रॉपर्टी नता है भारत रे आमे जदि निज घरे भी देखिबा पिले ए जिंसटा आमे देखि परिबा एंड property is hardly acquired or held by women. hardly बहुत कष्टरे का घरे कामा को स्त्री नारे को माने गोटे जमी की टिके किछि गोटे पासबुक थिबो एमते इन इंडिया भारत र कथा जदि आमे नबा इन इंडिया around 87.3%. look at the percentage guys. around 87.3% of women are dependent on agriculture. 87.3% of women are dependent on agriculture. चाष ऊपर डिपेंड करिकी चलते. But 10.3% among them own land. आउ ए माने जो 87% चाष ऊपर डिपेंड करिकी चलते से मानक भितरु मात्र 10% 10.34 का पाखरे जमी अछि सी महिला मानक नारे, which is the most important household asset. And as you know, land is the most important household asset. परिवार रो सबुठारु बड़ प्रॉपर्टी होउची land. You might have seen or heard from your families that in the past daughter had no share in the parents property. तम निश्चित भाबे सुनि दिबो जे अतीत रे झियर बापार संपत्ति रे कोनसे अधिकार रहू नथिला. Sisters remained at the mercy of their brothers and their father's demise after their father demise. भौणी माने भाईंकर दया उपरे चलुथले, दया को डिपेंड करके रहउथले बापांक मृत्यु परे. Married women, विवाहित महिला married women had almost no rights. पाखापाखि सेमानकर कोनोसी अधिकार ही रहउ नथिला, had almost no rights to their parental property. बापार संपत्ति ऊपर कौनसी अधिकार रहू नथिला. एंड विडोज इनवायरेबली कहले ऑलवेज विधवा हो गला परे इनवायरेबली ऑलवेज लिव्ड एट द मर्सी ऑफ देयर सन्स एंड अदर मेल मेंबर्स ऑफ देयर इन लॉज फैमिली. जेतले विधवा स्वामी मरी जाउथले तांकर पुओ झियो किंबा तांकर ससुर घर लोक मानक ऊपर संपूर्ण भाव निर्भर करके चलुथले. But property as a powerful means to better women's status in the family and in society. If we want to standardize the status of women, if we want to see the development of women, then we must provide them some property rights. किछि तो दवा पई पड़िबो जदि सेमानकर स्टैंडर्ड रेज करिवार अछि सेमानकु सोसाइटी मेन स्ट्रीम को आनिवार अछि देन वी आर टू प्रोवाइड देम टू इराडिकेट देयर पॉवर्टी एंड टू एंश्योर अ वायलेंस फ्री एंड हेल्दी लाइफ फॉर देम. टू इराडिकेट देयर प्रॉपर्टी एंड अ वायलेंस फ्री एंड हेल्दी लाइफ फॉर देम. गोटे हिंसा मुक्त समाज गोटे समभावापन्न समाज गठन करिवा पाई सेमानंकु संपत्तिगत अधिकार दबार आवश्यकता रही. लैंड एंड प्रॉपर्टी ओनरशिप एम्पावर्स वुमेन एंड प्रोवाइड्स देम विथ इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी. एंड लैंड एंड प्रॉपर्टी राइट्स जदि दिया जाए इट एम्पावर सेमानंकु शक्तिशाली करे एंड प्रोवाइड्स देम विथ इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी. सेमाने निरापद माने मने करमती निजकू एवं आर्थिक भाव स्वच्छल भी मने करमती जदि ए अधिकारटा सेमानक पाखरे थाए. इट इंक्रीजेस देयर political participation and empowers them. And why this? By having property rights, it increases their political participation. राजनैतिक चिंताधारा परिवर्तन घटे एवं सेमानकर अंशग्रहण क्षमता बढ़ी जाए and empowers them एवं सेमानको शक्तिशाली करिथा. Women lack of property rights also results in domestic violence. And if the woman is lacking property rights, it also causes what? Violence inside family. पारिवारिक हिंसा को भी माने बढ़ी दी था. वर्तमान नेक्स्ट क्लॉज रे हम पढ़िबा व्हाट डू प्रॉपर्टी राइट मीन्स. संपत्तिगत अधिकार कहिले कोन?
Property rights include the legal right to acquire, own, transfer and sell property. Property right is nothing but it is the legal right, ଆଇନଗତ ଅଧିକାର, to acquire ଗ୍ରହଣ କରିବା, own ନିଜର ନାଁରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା, transfer ଅନ୍ୟକୁ ଦବା and sell ବିକିବା। ये जो चारिटा जिनस रहा कौन acquire, own, transfer and sell, ये चारिटा राइट्स जदि जनकर अच्छी ताहले से प्रॉपर्टी ऊपर तार अधिकार अच्छे। It also empowers the person to keep one's wages, enters into contracts and bring lawsuits, and it also यह पुणी क्षमता प्रदान करता है कौन करने पाई enters into contracts and bring lawsuits, कौन सी एक एग्रीमेंट द्वारा संपत्ति ट्रांसफर करवा किंबा आईनगत कार्यानुष्ठान नवा पदक्षेप नवा पाई जेतेबेले जने लोक एंटाइटल्ड होता है सेतेबेले कह जे तार प्रॉपर्टी राइट्स अच्छी। देन they can also collect rent from that asset, and whatever asset I have I can collect rent from that also if I have property rights। जदि मो पाखे संपत्तिगत अधिकार अच्छी से जिनटा को भड़ारे लगी कि पैसा कलेक्शन करिवार अधिकार भी मोर अच्छी। So women in different capacities need property rights, and women need property rights, सेमान को संपत्तिगत अधिकार दरकार। These capacities are as married or unmarried daughters, as married or deserted wives, as mothers and widowed mothers, even women in live in relation need property rights। सो जितेबाला गोटे स्त्री विधवा हो जाए, जितेबाला गोटे झील जन्म हुए, जितेबाला गोटे स्त्री हुए, तो ये सब कंडीशन रे सेमान को प्रॉपर्टी राइट्स दबा दरकार। तो वर्तमान देखिबा हमर जो न्यायिक विधि व्यवस्था अछि बा भारतीय लॉ सिस्टम जो अछि वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स इन द इंडियन लीगल सिस्टम, भारतीय आईन व्यवस्था रे स्त्री मानकर संपत्तिगत अधिकार विषय आलोचना करिबा। द इंडियन सक्सेशन एक्ट बा भारतीय उत्तराधिकारी नियम जो अच्छे 1925 मसीह जोटा क्रिएट होता वो द फर्स्ट एक्ट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी राइट पास ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा। ब्रिटिश अमल समय 1925 मसीह प्रथम नियम पारित होता जहाँ को कह 1925 रे। This act was silent over women's right to property, and in this act there is no mention about the property right of women, कौनसी वर्णना नथिला सेतरे। But this act was overridden by the customary laws। This act was silent, yes, but this act was overridden by the customary laws of the communities relating to property rights of women। And region brought difference in customary laws accordingly. There were variation in laws regulating property inheritance, and this property inheritance of women or property rights of women varies from region to region, caste to caste, society to society, and community to community, and country to country। So the Hindu Widows Remarriage Act 1856 1856 मसीह रे जो विधवा पुनर्विवाह आईन प्रणीत है हिंदू धर्म रे clearly denied a Hindu widow the right to property, and it clearly denied बारण करिछि the women had right to property। जे विधवा हैला परे से स्वामीर अधिकार संपत्ति अधिकार हबो यह क्लियरली डिनाई कराइछि। और मेंटेनेंस फ्रॉम डेड हस्बैंड प्रॉपर्टी, सेल्फ एक्वायर्ड एंड जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। इफ सी मैरिड अगेन, जदि से आउ थरे बाहा हो जाए, द हिंदू वुमेन प्रॉपर्टी राइट एक्ट ऑफ 1937 1937 मसीहा हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज प्रॉपर्टी एक्ट अनुजाई allowed single widows, that is widows who did not remarry, some right to maintenance and property out of the joint family estate। सेही क्षेत्र रे जदि बाहा न हुए सेही क्षेत्र रे ताकू संपत्तिगत अधिकार स्वामीर संपत्ति किसी अधिकार मिलिबो। एई आईनटा 1937 मसीहा आस्तिला। द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 हिंदू उत्तराधिकारी नियम 1956 मसीह जितेबाला पुणी थोड़ा रिवाइज छला वो द फर्स्ट एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। दिस द प्रथम नियम स्वाधीन भारत प्रथम नियम टू प्रोवाइड प्रॉपर्टी एंटाइटलमेंट्स। यही माने एक्ट रे प्रथम करी स्त्री माननकु नारी माननकु किछि प्रॉपर्टी रो अधिकार मिलिला।
बट डिड नॉट गिव डॉटर्स एनी राइट टू प्रॉपर्टी एथिरे कौन है विवाहित महिला मान प्रॉपर्टी राइट्स दिगला किंतु झील मान कौन प्रॉपर्टी राइट्स दिगला नहीं द 1956 सक्सेशन एक्ट 1956 जो सक्सेशन एक्ट विषय आम आलोचना करुचे थ्रू सेक्शन 4 क्लॉज 2 kept agricultural land out of its purview आउ ए एक्ट रे एग्रीकल्चरल लैंड को संपत्ति बहिर्गत कर दिया गला वुमेन्स राइट रो बाहर रखी दिया गला इन केस ऑफ ए डाइवर्स जदि छाड़ पत्र हुए इन केस ऑफ ए डाइवर्स द वुमेन बिकम्स एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस जदि बाहागर हुए ताहेले कौन हबो से स्त्री को मेंटेनेंस पाई खर्च दिया जीवो बट she gets no entitlement on her husband property and asset किंतु स्वामी रो समस्त संपत्ति उपरे अधिकार रो हक जमई पारिबो नहीं मोरओवर मोटा मोटी भावे जो देखिबा women's work in the care economy and the household enterprises be it a handicraft unit or a freight shop or in the household agricultural field remains unremunerated. The property and price generated by them goes to the pockets of their male partners. So whatever sector it may be, whatever work the women doing, all the property, whatever pay they are getting in any sectors, all the payments, whatever payment being got by women especially, goes to the pocket of husband. Still, after the death of her husband, she has no property rights over the assets of her husband. स्वामी रो जहाँ भी अधिकार थी से अधिकार उपरे यार अधिकार रहू ना किंतु जिते बंची समय स्त्री जहाँ भी कम करुच्ची हजबैंड पॉकेट को सब पैसा जाऊँगी तो एटा को देखिले हमको जना पड़ी जे देयर इज कंप्लीट एंड क्योर कंप्लीट एंड प्योर डिस्क्रिमिनेशन इन द प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 1956 हिंदू जो सक्सेशन एक्ट रहा अलाउड विडोज टू हैव अ राइट टू मेंटेनेंस फ्रॉम देयर डिसीज हजबैंड्स सो मृत स्वामी परिवार तरफ मेंटेनेंस पाइबार हक स्त्री मानकर अच्छी हाँ प्रॉपर्टी इवेन इफ दे रिमेरी जदि से माने बाहा भी आउ थरे होउछंती ताहेले भी से माने तार भाग पाइबे द मेजर प्रोविजन्स ऑफ द एक्ट इंक्लूडेड द फॉलोइंग सो कौन कौन रहिला मेजर प्रोविजन देखिया पिले अब प्रथम नंबर क्लेम्स ऑफ फीमेल हेयर्स अदर देन द विडोज वेर रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रॉपर्टी माने स्त्री भी उत्तराधिकारी हे पारिबो नंबर 2 remarriage conversion and violating rules of chastity are no longer held as grounds for disinheriting women so माने remarriage किंबा कहा सहित अवैध संपर्क यही सब भी जदि रहे ताहेले भी ताकू संपत्ति रु बाहर कर दिया जाई परिबो नहीं थर्ड रीजन इवन द अनबर्न चाइल्ड son or daughter has a right माने जन्म न होइथिबा छुआ जा नेक्स्ट जे जन्म हुए ताहार भी अधिकार अच्छी इफ सी वॉज इन द होम एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द इंटेस्टेट्स इफ बर्न सब्सिक्वेंटली बापा जिते बड़े मरी जाउछंती से समय जदि छुआ माँ पेटरे थाए से छुआर भी बापा संपत्ति उपरे अधिकार अच्छी ऑन सेप्टेम्बर 9 2005 सेप्टेम्बर 9 2005 मसीह द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 वॉज अमेंडेड 1956 मसीह जो हिंदू सक्सेशन उत्तराधिकारी नियम थिला ताहा बदलिला कौन बदलिला अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 अनुजाई एवरी डॉटर प्रत्येक झियो अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट वेदर मैरिड और अनमैरिड से विवाहित हो किंबा अविवाहित हो इज कंसिडर्ड ए मेंबर ऑफ हर फादर्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तांकू कौन करा जीवो से विवाहित होइथिले किंबा न होइथिले मध्य से परिवार रो जने सदस्य भाव रे निया जीवो शी कैन इवन बी अपॉइंटेड एज कर्ता ऑफ द फादर्स प्रॉपर्टी इवन इफ शी हैज द पावर टू होल्ड ऑल द प्रॉपर्टीज इफ द फादर हैज नो सन इन द फैमिली so let's see the last part of the text the functionality of women property rights laws relating to women property rights are becoming progressively clear and women friendly धीरे धीरे आईन सब तैयारी चली आ women friendly आईन सब तैयारी होछि जहाँ माने स्त्री मान को सुहेला बळे आईन सब तैयारी होछि but much more
किंतु अधिकांश जगह स्टिल रिमेन्स टू बी डन इन दिस एरिया बहुत काम एबे भी करिवार अछि कस्टमरी लॉज प्रथागत नियम परंपरागत नियम जो रही एंड स्टिग्मस प्रिवेंट वुमेन फ्रॉम क्लेमिंग प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस ये एबे भी स्त्री मान को बारण करुच्ची कौन करने प्रॉपर्टी राइट क्लेम करने कि माने सत्वाधिकार हिसाब रे प्रॉपर्टी पाइबा तो ये थिला पिले एथिक्स एंड वैल्यूज रो शेष क्लास प्लेलिस्ट रे टोटाल 1 रु 18 जाए टोटाल क्लास अच्छी जार किसी डाउट अच्छी को जिनस तुम देखिपर दैट्स ऑल थैंक यू फॉर जॉइनिंग द क्लासेस स्टे ट्यून्ड मास्टर ऑफ इंग्लिश बाय बाय